Hi friends, this is Prabir Kundu once again. I welcome all of you in my this episode of video where I am going to narrate मेरे ज़िंदगी की एक फेल्योर की कहानी, ज़बरदस्त फेल्योर की कहानी, और उस फेल्योर से मैंने अपने आप को किस तरह से निकाला and put me back on the success of the track that I am going to share with you. The incidence was of that time when I was of 45-46 years of age. And in the pharmaceutical company I was working, I was awarded because of my wonderful work a promotion. मुझे कंपनी ने प्रमोट करके सेल्स मैनेजर बना दिया और they have given me a responsibility of 150 plus people of my team, जिसमें जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर और रिप्रेजेंटेटिव करके 150 लोगों से ऊपर का एक टीम मुझे दिया और एक हाफ ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन्होंने हमको दिया. बढ़िया, ठीक है ना. प्रमोशन कौन नहीं चाहता है. तो आई गॉट प्रोमोटेड एंड दैट वाज द पॉइंट ऑफ माय लाइफ व्हेन with the God's grace everything was growing with me. Not only I got a growth in my professional career, my family responsibility at the same time had grown. My social responsibility at the same time has also grown. My commitment level and my responsibility also grown. So सब कुछ जो है ना वो ग्रोथ के ट्रैक पे था. और एक बात है ना, हिंदी में बोलते हैं कि भगवान जिसको देता है उसको छप्पड़ फाड़ के देता है. तो उस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में एक और ग्रोथ जुड़ा मेरे लाइफ में, दैट आई ऑल्सो विद द गॉड्स ग्रेस बिकेम डायबिटिक. ठीक है ना. तो ग्रोथ ही ग्रोथ, राइट, फाइन. इनिशियली आई वॉज हैविंग टू वंडरफुल एट्रीब्यूट्स विथ मी. एक तो मेरा विल पावर जो है ना वो बहुत स्ट्रांग था, जो आज भी है, अभी भी है. एंड सेकेंड, माई वर्क टेनेसिटी वॉज ट्रेमेंडस. मेरा कंटिन्यूसली 10, 11, 11.5 घंटे जो है कंटिन्यूसली मैं काम कर सकता था. बिकॉज द जॉब वॉट आई वॉज डूइंग, आई वॉज पैशनेट. आई यूज टू लव दैट जॉब. और अभी भी जो है मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, उस जॉब को. तो मुझे काम में कोई थकान नहीं होता था. So obviously with the higher of the responsibility of 150 plus people और इतना सारा जो half of the India के एरिया जो है वो मेरा जिम्मेदारी जो है, it had increased my responsibility, it had increased my touring, it had increased my working hours, and in line with that, because of my late father, I had some another good attributes with me. One, that I was very disciplined person. हाँ, मुझे अगर किसी ने सुबह 8 बजे मिलने के लिए कहीं बुलाया तो मैं सुबह 8 बजे वहाँ पे 5 मिनट पहले ही हाजिर हो जाऊँगा. ठीक है ना. आई वॉज ए वेरी सिस्टम ओरिएंटेड पर्सन. आई ऑलवेज रिलीजियसली वर्क. माई इन्वॉल्वमेंट टू द वर्क वॉज 200%. अगर कंपनी का स्ट्रेटेजी जो है वो 11 डॉक्टर को मिलने का है और 6 केमिस्ट को दिन में मिलने का है, तो आई विल मेक इट ए पॉइंट कि 11 डॉक्टर और 6 केमिस्ट मिल करने के बाद ही हम अपने घर में घुसे या अपने होटल में घुसे, अगर पॉसिबल है तो. If it is not possible, then it's a different thing, different ball game. So my involvement was 200%. So my wish was there. मैं सोचता था that all 150 plus team members what is being assigned to me will be a true copy to me. यहीं से जो है चीज़ें थोड़ा सा गलत होना शुरू हो गया. Suppose somebody had given me a time to come at 9 o'clock and he is coming at 9:15. So I used to get upset. Then I asked to him that why you have come 15 minutes late to me, because I was not having this kind of habit. या मैंने किसी देखा कि some of my colleague the involvement level or strategy implementation level is very casual. So I simply cannot tolerate that kind of thing. Somebody is very casual towards their target. So I simply cannot tolerate with them. तो इस तरह से क्या होता गया, because of this what happened that I used to get anger. I used to get anxiety, lot of anxiety. I used to get frustration. और दिन में कई बार ऐसा हो जाता था that I used to have some 3, 4, 5, 6 bouts of some hot discussion or something like that. My control on myself was slowly losing. तो इन सब का रिजल्ट
क्या हुआ, व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ ऑल दिस थिंग दैट वाज हैपनिंग विथ मी, दैट माय वर्क टेनेसिटी वाज गेटिंग अफेक्टेड। मैं अभी क्या लंबे समय तक जो है वो जो आदमी काम करना, हु यूज्ड टू बी सो पैशनेट अबाउट हिज वर्क, वो आई वाज अनविलिंग टू वर्क। इवन सम टाइम इट हैपन्स कि शाम के समय में मेरा काम करने का दिल ही नहीं करता था, क्योंकि आई वाज लेफ्ट विथ नो एनर्जी। दैट वाज माई दैट वाज माई दिस थिंग। तो आई गेट वेरी वरीड, हाँ, कि अगर इस तरह से चलता रहा तो व्हाट विल हैपन, द कंपनी विच हैड अवॉर्डेड मी विथ ए प्रमोशन एंड सैलरी हाइक एंड रिकॉग्निशन, दैट कंपनी विल थ्रो मी आउट बिकॉज द परफॉर्मेंस विल बी अफेक्टेड। तो आई वॉज वेरी वरीड। तो क्या हुआ कि मैं अपने एक बहुत ही सीनियर कलीग को, जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था, आई वेंट टू हिम and I discussed the entire thing about all this happening with him in detail. After listening me very patiently, that my well-wisher and my senior colleague, he advised me कि Mr. Kundu, you go to a bookshop, और डेनियल गोलमैन का एक किताब आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, आप उसको खरीद लो, परचेज द सेकेंड हैंड कॉपी ऑल्सो, हाँ, और उसका पहला 2 चैप्टर जो है पहले आप उसको पढ़ो, then I will speak to you. Okay, we will speak once again, we will discuss. So that day only I went to the bookshop and purchased a second hand copy of Daniel Goleman on emotional intelligence, जो कि करीब 150 रुपये का था। मैंने खरीदा और खरीद के मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। When I started reading that book of the Daniel Goleman, तब मुझे पहली बार पता चला, I came to know about the emotions, about the people's feeling, about the positive emotion, about the negative emotion, about how we get the anger, about how we get the anxiety, about how we get the frustration, हाँ, और इसको किस तरह से डिटेक्ट करने का है, किस तरह से पहचानने का है, और किस तरह से वी कैन रेगुलेट ऑल दिस थिंग्स। तो ये सारा कुछ जो है वो मैं पहला 2 चैप्टर पढ़ने के बाद वो मेरे को धीमे धीमे सब कुछ कहानी जो है वो समझ में आने लगा। So I understood the reason that because of my frequent bouts of the anger, hot discussion and anxiety and frustration, it is having a direct effect on my work tenacity. So I have to some way find out the ways to eliminate all these things as fast possible. तो मैंने उसका उपाय जो है वो ढूंढ निकाला। I started doing the meditation, ठीक है, मेरी, और सुबह उठ के मॉर्निंग एक्सरसाइज भी मैं शुरू कर दिया। तो उस मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने के बाद धीरे 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 व्हाट आई ऑब्जर्व ए चेंज इन मी, आई स्टार्टेड कंट्रोलिंग माई फीलिंग, आई स्टार्टेड कंट्रोलिंग माई इमोशंस। और उससे क्या हुआ कि मेरा धीरे धीरे ये जो एंगर का, फ्रस्ट्रेशन का और डिप्रेशन का, विच वॉज ruining my career and pushing me to the trajectory of the failure, I started coming back. Abhi the frequency of the bouts of this anger or hot discussion or anxiety, it had started reducing. और जैसे जैसे ये रिड्यूस होना शुरू हुआ वैसे वैसे my work tenacity, विल पावर तो था ही, my work tenacity once again it had started coming on the track, and once again I started enjoying my evening work. I started enjoying my long tenure of working even 10:30 11 o'clock overnight. Once again I came back to the track. So what is the moral of the story that I learned from this, and hopefully you will also agree with me that my learning is okay, that हमारा जो ये एनर्जी है, हमारा जो ये इमोशन है, जो पॉजिटिव इमोशन है, जो निगेटिव इमोशन है, जैसे पॉजिटिव इमोशन है हैप्पीनेस है और प्लेजर है, सेटिस्फेक्शन है, ये हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है। उसी तरह से द निगेटिव इमोशंस लाइक एंगर, लाइक एंजाइटी, लाइक डिप्रेशन, लाइक फ्रस्ट्रेशन, इट रिड्यूसेस एंड इट ड्रेन्स आवर एनर्जी लेवल, बिकॉज आवर इमोशन इज ऑल आवर एनर्जी। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? हमारा कॉन्सेप्ट था कि भाई हम जो खाना खाते हैं और उससे द ग्लूकोज वी प्रोड्यूस, द कार्बोहाइड्रेट वी प्रोड्यूस, द फैट वी प्रोड्यूस, दैट ओनली कंट्रीब्यूट्स टू आवर एनर्जी।
लेकिन ऐसा नहीं है. After reading this 2 chapter of the emotional intelligence of Daniel Goleman, what I observed, what I explored, that our emotions, our feelings, that are also one of the strongest source of our energy. And we cannot simply afford to waste this energy, because if this energy is being wasted means it will have a direct negative effect on our progress. It will have a direct and negative effect on our prosperity. It will direct and negative effect on our peace, right? So friends, please let us remember that our emotions are our energy, and it is our prime responsibility to see that we should not drain any 1% of our energy for any useless work, right? Okay, I learned this lesson. Hopefully, if you are also going through this kind of any bout or any kind of incidents, after listening this video, you will definitely also correct and move forward on the path of the progress, prosperity and performance as I did, right? Okay, so till then, from here, it's goodbye to you, and we will meet in my once again the next video session. If any one of you want to have any kind of consultation with me, you can give me a ping on my cell number 75968999302 between 6 to 7:30 p.m.